नमस्कार, जय भीम. दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज रविवार. आज जे काही राज्यसभेत लोकसभेत दिल्ली इथे जे झालं त्याच्यावरती वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कॉमेंट्स आता सुरू झालेले आहेत. एक अत्यंत दुःखद बाब म्हणजे गुजरात इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये काँग्रेसच्या मुख्यालयावरती काँग्रेसच्या ऑफिसवरती एक हल्ला झाला. BJPच्या लोकांनी केला आणि त्याला प्रतिउत्तर म्हणून राहुल गांधी तिथे गेलेत आणि राहुल गांधींनी त्यांना सांगितलं की ही भेकाड प्रवृत्ती थांबवा, घाबरू नका, डराव मत, किसी को डरो मत, अशा पद्धतीच्या त्या घोषणा झाल्या. हे सर्व व्हिडिओ मी तुम्हाला याच्या आधी दाखवले आहेत आणि बाकीच्या ठिकाणी तुम्ही पाहिले असतील. एक सुंदरसा व्हिडिओ माझ्यासमोर आज आला. मुस्लिम लोकांच्या ज्या भावना आहेत या इलेक्शन आणि 10 वर्षामध्ये जे त्यांची कोंडी जी झाली होती BJPच्या राज्यात त्याच्यावरती आधारित एक सुंदरसा क्लिप तुम्हाला दाखवू. थोडासा लांब जरी असला तरी ती पाहण्याची अत्यंत गरज आहे. महत्त्वाच्या भाषा आहेत आणि त्याच्यामधल्या ज्या ज्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला याच्यातनं दिसतील. एक दुसरा छोटासा व्हिडिओ आहे. खरगे यांनी सांगितलेलं आहे की आजपर्यंत जे काही बेनिफिशरीज राहिले, जे कोणी हे केलेले लाभार्थी आहेत ते RSSचे सर्व लोक जिकडे तिकडे मोठमोठ्या अधिकाराच्या पोस्टवरती आहेत आणि ते त्यांना जे साध्य करायचं होतं तेच साध्य झालेलं आहे. त्याच्यामुळे RSS आणि BJP हे एकच असून यांनी एवढ्या वर्षामध्ये फक्त मलाईकचे कामं केलेले आहेत. वारंवार त्यांना थांबवणे, परंतु राज्यसभेमध्ये ते अत्यंत तीव्र याच्यामध्ये ते दिसत होते आणि निश्चितच आत्ता छोटीशी क्लिप आहे, ती पण तुम्हाला पाहायला आवडेल. बघूया आपण. हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में BJP RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है. प्रोफेसर्स, NCERT, CBSE सब में RSS का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है. एक बार स्थान ग्रहण कीजिए. कोई गरीब है उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए. है उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए. है उसमें. आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए. ये विचारधारा जो है देश के लिए उनकी विचारधारा खतरनाक है. इसलिए मैं चाहता हूं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए. RSS के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की. सारी इंस्टीट्यूशन छिन गई. इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज नहीं रही कि इस मुल्क में मुसलमान इस तरह से पहचाना जाएगा. हमारा प्राइम मिनिस्टर हमको घुसपैठिए के नाम से जानने लगा. हमारे घरों पे बुलडोजर चले, हमारे बच्चे शहीद किए गए. हम देशद्रोही नहीं हैं, हम इस मुल्क के सच्चे खादिम हैं. जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुलेआम यह कहता हो कि घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, खामोशी है, अदालतें चुप हैं, सरकारी मुलाजमीन उनसे बिक चुके हैं. हमने मोदी के हाथ तो पकड़ लिए हैं, उसकी कुव्वत अभी बाकी है. हजरात, ये एक ऐसा इलेक्शन हुआ जो मैंने कभी नहीं देखा. जीतने वाले भी खुश और हारने वाले भी खुश. रूलिंग अलायंस भी खुश है और वो अलायंस जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का अहद किया वो भी खुश है. वो खुश इसलिए है कि उसने जालिम के हाथ को रोकने की कोशिश की. वो खुश इसलिए है कि उसने हिंदुस्तान को मज़ीद बर्बाद होने से रोका है. वो खुश इसलिए है कि हिंदुस्तान में एक किरण जागी है. और वो अलायंस जो आज हाकिम वक्त है वो इसलिए खुश है कि 10 साल में जो उसने मजालिम किए हैं, जो बेईमानियाँ की हैं, जो करप्शन किए हैं, उसका हिसाब देने के लिए कुछ टाइम उनको मिल गया है. ये ऐसा इलेक्शन हुआ है. इस इलेक्शन से पहले इन 10 साल में जो कुछ हुआ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा. मैं पिछले 50 साल से सियासी गलियारों में घूमता हूँ और 60 साल से सियासत का शौक़ रखता हूँ जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना था. लेकिन इस तरह का हिंदुस्तान मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था. सारी इंस्टीट्यूशन छिन गई.
इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज नहीं रही, लेकिन हम पे क्या गुजरी पिछले 10 साल में, हम पे जो गुजरी उसको बयान नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपने को ऑप्ट किया था, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस मुल्क में मुसलमान इस तरह से पहचाना जाएगा। हम यहाँ कभी भाइयों की तरह रहते थे, फिर ये आलम हुआ कि हम यहाँ दुश्मनों की तरह रहने लगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमको घुसपैठिए के नाम से जानने लगा, हमारे घरों पे बुलडोजर चले, हमारे बच्चे शहीद किए गए, हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया। अफसोस और दर अफसोस ये रहा कि जो सेक्युलर पार्टियां थीं वो दूर से देखती रहीं, हम खुले आसमान में बर्बाद होते रहे। हम ये कहने की कोशिश करते रहे कि हमारा जुर्म क्या है। ये जुर्म है हमारा कि हमने जिना को छोड़ दिया, ये गुनाह है हमारा कि हमने मौलाना आजाद और नेहरू और गांधी को मान लिया। 70 साल के बाद हर लम्हे हमको ये कहना पड़ा, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम इस मुल्क के सच्चे खादिम हैं। इसीलिए IMCR ने यह कोशिश करी कि किसी सूरत से आइन को बचाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है वो है जिससे हमारा इस मुल्क का बुनियाद है, हमारा हिस्सा है। हम साझी विरासत के मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब अलायंस हुआ, इलेक्शन हुआ संविधान बचाने का और संविधान तोड़ने का, तो हम पूरी कौम ने पहली बार सन 92 के बाद मुसलमान का रवैया ये था, निगेटिव वोटिंग करता था। कभी अखिलेश के साथ मिल जाओ तो हरा दें, कभी एक्स के साथ मिल जाओ तो बीजेपी को हरा दें। इस बार उसने फैसला किया कि हम सिर्फ उनके साथ रहेंगे जिन्होंने कानून को, आइन को बचाने की बात करी। हमको सबसे कम सीटें दी गईं। हमारे मुस्लिम इलाकों में बड़े बड़े लीडरों को उनको टिकट नहीं दिए गए, लेकिन हमने परवाह नहीं की। हमने न बिरादरी की परवाह की, न मसलक की परवाह की। पूरी कुव्वत के साथ से इस हिंदुस्तान को दोबारा आज़ाद करने के लिए कोशिश करी। आज इतनी कुव्वत ज़रूर आ गई कि अलायंस के पास कुव्वत आ गई है। हम आज सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं आपसे, हमारा अगला अमल क्या होगा। जब आपके पास पावर नहीं थी तो आपने चुप्पी अख्तियार कर ली थी, अब तो कुव्वत आ गई है, अब भी क्यों चुप हैं आप। अभी देखिए लखनऊ में मुसलमानों की पूरी एक बस्ती जला दी गई, चुप्पी है। अलीगढ़ में एक शख्स को लिंच कर दिया गया, खामोशी है। यहां तक कि लीडरों का आलम यह है कि मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं, क्योंकि जो अपीजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मुश्किल यह है कि हम लोगों ने नेहरू की वो तकरीर नहीं सुनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 29 अगस्त 1949 को कही गई थी। यही बात उस वक्त भी आई थी कि कहीं अपीजमेंट का किस्सा ना शुरू हो। नेहरू खड़े हुए, वो तकरीर मौजूद है रिकॉर्ड में। वो कहते हैं कि एक नया लफ्ज लाया गया है अपीजमेंट का, और इस नए लफ्ज की मैं बुनियाद को मानता नहीं हूं। इसलिए सबकी बराबरी है। अगर आप इसको अपीजमेंट कहते हैं तो मैं अपीजमेंट करूंगा, लेकिन मेरा हाथ सेक्युलर लीडर वो मेरे नाम से डरता है, मेरे नाम को लेने से डरता है। कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, मनोज झा, जिनसे मैं कदर करता हूं, बहादुर लोग हैं। इस इलेक्शन ने एक बात साबित कर दी जो मेरा यकीन था कि हिंदुस्तान का हिंदू कमनल नहीं है, वो मेरा भाई है। जो नुकसान हुआ वो चुप्पी से हुआ, खामोशी से हुआ।
ये वक्त इस वक्त साहिल पे बैठकर तूफान का नज़ारा करने का वक्त नहीं है मेरे अजीजों। ये वक्त है पानी में डूब के देखो कि गहराई कितनी है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं क्या करेंगे बोल के आप। ये जो खामोशी है, ये जो खौफ है, इसे निकलना होगा। हम पूरी कुव्वत के साथ अपने सेकुलर भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जिस आइन के लिए आप लड़ रहे हैं उस आइन में हमारी हिफाजत भी है, हमारा हिस्सा भी है, उसको याद रखें। जब हम पे जुल्म हो तो आवाज उठाएं, हमारे हिस्से हमको दें, हमारा नुमाइंदगी हमको दें। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा न हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें मानी जाएं और कुछ न मानी जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है हर इंसान बराबर है, लेकिन क्या हम बराबर हैं? ये सोचें आप। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुलेआम यह कहता हो कि घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, खामोशी है, अदालतें चुप हैं, सरकारी मुलाजमीन उनसे बिक चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अलायंस के साथियों से, हिम्मत करिएगा, डरिएगा नहीं। आप आइन को मानती हैं और अगर आप नेहरू और गांधी और लोहिया को मानती हैं तो ये आपका फर्ज है कि जब हम पे सितम हो तो बोलिए। सिर्फ ये न कह दीजिए कि साहब माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा, कहीं ना कहीं काफिया लगा देते हैं। अमेरिका में कल भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने साफ साफ कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या हमारी पार्लियामेंट नहीं बोल सकती है? ये किस किस्म की पार्लियामेंट बनाई गई है जहां बोलने के माइक बंद कर दिए जाते हो? क्यों खर्च किया करोड़ों रुपया? अगर आवाज बंद करने के लिए नया पार्लियामेंट बनाया था तो फिर इस पार्लियामेंट की बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं हमने मोदी के हाथ तो पकड़ लिए हैं, उसकी कुव्वत अभी बाकी है। 4 स्टेट में अभी इलेक्शन होना है। हम सबको, हिंदू मुसलमान सब मिलके उन 4 स्टेटों में इनके पैरों को और तोड़ें और अपने इस बात का ध्यान रखें कि जो भी लोग आ रहे हैं इस मुल्क में अब हाकिम बनने, कितनी ही अंधेरी रात हो, सूरज निकलने की पहली किरण में बिखर जाती है। उस पहली किरण का अंदाजा कर लें, वो किरण करीब आ चुकी है। ये अंधेरी रात लम्हे में खत्म हो जाएगी। लेकिन आज नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं एक छोटीशी क्लिप तुम्हाला घेऊन येतो आहे। ज्यावेळेस यशोधरेने ऐकलं की सिद्धार्थ आपल्या अशा अशा पद्धतीने तो आपलं जीवन जगतो आहे, तर तिला असं वाटलं की जरी हा सिद्धार्थ नसला तरी आम्हाला त्याच्यासारखं अनुकरण तर निश्चित करता येते। त्याच्यामुळं ती पूर्णपणे आपला जो वेशभूषा बदलवते, खाली राहण्याची, खाली झोपण्याची सवय करते, खाली पायात चप्पल न ठेवता अशा पद्धतीचं तिचं जीवन जगते। आणि त्यावेळेस राजा शुद्धोधन, प्रजापती हे दोघे त्यांना समजवतात आणि ती म्हणते की आम्ही कमीत कमी एवढं तर मात्र मी ती करू शकतो। अशा पद्धतीचा हा सुंदरसा व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन येतो आहे बुद्धा या सिरियलमधनं, बघूया। सिद्धार्थ लोग बुद्ध के नाम से पुकारते हैं, बुद्ध के नाम से पुकारते हैं। राजगृह के युवा वर्ग में तो सिद्धार्थ का अनुयायी बनने की जैसे होड़ सी लग गई। गृह गहने सब त्याग कर गेरुआ धारण कर भिक्षा पात्र में भिक्षा मांगता है दिन रात, और दिन में केवल एक बार पूजन करता है। बांस की कुटिया बनाकर वहीं रहता है।
भूल गया है, अभी हमें मारा था। अमात्य, इस संदेश के साथ और एक संदेश लिखो। अब शांति काल है, इस मास किसानों से कर नहीं वसूला जाए। ये तो बहुत उचित है महाराज। क्या हुआ देवी? महाराज, यशो को यशोधरा ठीक तो है? बहुत दिनों से वो यहां भी नहीं आई। क्या हुआ उसे? मैं नहीं कह पाऊंगी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। यशोधरा, ये क्या है यशोधरा? कितना समझाया मैंने इसे, पर ये अपने निर्णय पर अड़ी है। माँ और पिताजी, आप मेरे लिए दुखी ना हो। अपनी राज रानी बहू को इस दशा में देखकर हम दुखी ना हो पुत्री। मेरा श्रृंगार भी वो थे और मेरी रूप सज्जा भी उन्हीं के लिए थी। यदि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो मैं उनका अनुसरण तो कर सकती हूँ ना। हमारी पुत्री इस कठोर धरती पर सोए, असहनीय है। जो उनका भाग्य वो मेरा भाग्य। अरे, बहुत अन्याय हुए हैं तुम पर। इस अन्याय का अंत यही होगा। अमात्य, जी महाराज। देखा अपनी भावी महादेवी की दशा। विरह रोग ने उसे ऐसे तड़पाया है कि इस फूल सी बच्ची की हालत देखो। बहुत अनर्थ हुआ है इस पर अब न होने दूंगा। तुम शीघ्र से शीघ्र मगध जाओ और सिद्धार्थ को वापस ले आओ। पिताजी, उनके मार्ग में बाधक बन जाए हम। कोई बाधा नहीं बनेगा उसके मार्ग में। सिद्धार्थ के पास जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र जाओ। उसे कहना कि वन में ही रहना है तो कपिल वस्तु के वन में रहे। इस अबला की स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या दोष है इसका जिसका दंड ये भुगत रही है? पिताजी, कृपा कीजिए। सिद्धार्थ यहाँ होगा तो कम से कम तुम उसे देख तो सकोगी, उससे बात तो कर सकोगी। इस विरह के अग्नि में प्रतिदिन भस्म होने की आवश्यकता नहीं होगी। अमात्य, चलना को साथ ले जाओ। नेहमीप्रमाणे दैनिक बहुजन स्वरूपच्या पेपरचा आज आम्ही आढावा घेऊया। आज दिनांक 7 जून विरोधकाकडून जातनिहाय गणनेची मागणी। आज त्याच्यामध्ये NDAचे नायडूकडून मोठी मागणी झालेली आहे। निश्चितच हे असेच इंडिकेशन्स आहेत की त्यांना BJPला त्यांच्यासोबत राहायचं नाही, त्याच्यामुळे अशा त्यांच्या डिमांड सुरू झालेले आहेत। परीक्षा रद्द करण्याचा विरोध आता तुम्हाला एवढ्यातच त्यांनी सांगितलं की परीक्षा आता रिएक्झामिनेशन होणार आहे। त्याच्यात ज्या ज्या लोक चांगल्या पद्धतीने पास झाले ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले की आमच्या विद्यार्थ्यांनी एवढी मेहनत करून त्यांनी पास केली, आता पुन्हा परीक्षा नको आहे। त्याच्या शेजारी नर्स सोजन जोसेफ यांची निवडणूक असा घडला इतिहास। लंडनची बाब आहे ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे पराभव झालेला आहे आणि त्या लेबर पार्टी आणि कन्व्हेन्शन पार्टी ह्या दोन्ही याच्यामध्ये टक्कर होती आणि या पहिल्यांदा 14 वर्षानंतर तिथे
लेबर पार्टीचा जिंकलेली आहेत. ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचा ऐतिहासिक पराभव, कीर स्टारमर नवे पंतप्रधान, निश्चितच त्याचा इंडियाशी त्याचा संबंध असल्यामुळे आणि भारतात त्यांची सत्ता असल्यामुळे आपण लोक इंग्लंडच्या अत्यंत जवळ असतो, त्याच्यामुळे ती बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आर्मस्ट्रॉंग यांची धारदार शस्त्रांनी चेन्नईत हत्या. आज न्यायालयात फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणावर सुनवाई सुरू. आज संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जूनपासून दिल्लीला 22 जून ही निश्चित झालेली आहे. पुन्हा अधिवेशन होणार आहे. बाबाबुवांच्या मागे जाण्यापेक्षा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखविलेल्या मार्गावर चालण्याचे मायावतीचे आवाहन, जी आता मोठी घटना घडलेली आहे. 2 जुलै रोजी चेंगराचेंगरीमध्ये 121 लोक मिळाले. कारतला हादरसमध्ये त्याच्यावरती ते बोलत होत्या. आज मंगकुटी बुद्धविहाराची तोडफोड करणाऱ्यावर कारवाई करा म्हणून आज डॉक्टर नितीन राऊत यांचं आवाहन. डी गजबिये यांच्या आज जन्मदिनानिमित्त 70 वर्ष पूर्ण झालेले आहे. त्याच्याबद्दल अनेक लोकांनी त्यांच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहे. त्याची जाहिरातसुद्धा आहे. नागपूर महानगरपालिकेचे माजी महापौर ॲडव्होकेट सखारामजी मेश्राम यांना स्मृती दिवस आहे. त्याच्याबद्दल ती एक बातमी आज आम्ही टाकलेली आहे. लग्नाच्या 27व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक मंगलकामना आमच्या बहुजन सौरभच्या डायरेक्टर प्राध्यापक माधुरी मिलिंद दुट्टे यांचा आज वाढदिवस आहे. निश्चितच सांगण्यासारखं म्हणजे त्यांच्या भावाची एक किडनी गेलेली होती, तर त्या तिन्ही माधुरींनी स्वतःहून लोकांना न जुमानता तिने आपली किडनी दिलेली आहे. हॉस्पिटलमधनं ती आता डिस्चार्ज झालेले आहे आणि ती इतकी खंबीरपणे आपल्या भावाच्या मागे राहिलेली आहे. असा तिने एक आदर्श सर्वांसमोर मांडलेला आहे. आज 5-4वरती बघूया. आरोप झाल्याने दान दिलेली 40 एकर जमीन मागितली परत. एक वर्धा इथली बातमी आहे. आषाढी पौर्णिमेनिमित्त धावणार विशेष गाड्या. पंढरीच्या याला आषाढ पौर्णिमेला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक जात असतात, त्याच्यासाठी विशेष गाड्यांचा प्रबंध केला आहे. खाजगीकरण हीच आरक्षणाची मोठी समस्या सुरेंद्र बुराडे यांची बाब आहे. अनेक ठिकाणी जिथे जिथे आरक्षण तिथे संपलं ते लोक म्हणतात की आम्ही आता आरक्षण तुम्हाला देणार नाही, परंतु आर्टिकल 12 हे मात्र सांगते की जिथे जिथे कुठे अनुदान असेल सरकारच्या ह्याच्यातलं तर तिथे आर्टिकल 12 असेल आणि जिथे आर्टिकल 12 लागू होते त्या तिथे स्टेटच्या डेफिनेशनमध्ये तिथे रिझर्वेशन होते, परंतु दलित समाजाने मात्र त्याच्यावरती दुर्लक्ष केलेलं आहे. याच्याच खाली राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना महाबीजच्या MD पदाचे वावडे. 14 वर्षात 12 अधिकाऱ्यांची नेमणूक. ती एक बातमी अकोल्याची बातमी आम्ही टाकलेली आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सांना मनमानी भोवली. बुलढाण्याची बातमी आहे. तिथे डॉक्टर चव्हाण म्हणून होते, मनमानीमुळे त्यांना निलंबित करण्यात आलं. मुख्याधिकारी नील डोहो यांना निवेदन. कुरखेडा इथली बातमी आहे. पत्रकारांचा विविध मागण्यासाठी व्हॉइस फॉर मीडियाचे लाक्षणीय आंदोलन यशस्वी झालेले. विश्व पर्यावरण दिवस गांधीसागरमध्ये साजरा. नागपूरची बातमी. आज युनायटेड बास्केटबॉल अकॅडमीच्या वतीनं होम लीग टुर्नामेंट उत्साहात प्रसन्न. काँग्रेसकडून सर्व 288 जागांवर नोंदणीसाठी अर्ज मागण्यात येत आहेत. नोकरीचा तिसरा दिवस आणि काळाने घातला डाव. एक अत्यंत हृदयलायक एक बातमी यवतमाळ इथली घडलेली आहे. एका पोरीला अत्यंत गरीब याच्यातनं मोठ्या मुश्किलीने तिला जॉब मिळाला, परंतु ती 3च दिवसात रस्त्याने जात असताना गाडीवर तिचा पदर मात्र गाडीत फसला आणि तिला हेड इंजुरी झाली आणि त्याच्यातच तुझा दुःख मृत्यू झाला, अशी ती बातमी आहे. तब्बल 1 लाख शेतकरी कर्ज प्रक्रियेच्या बाहेर. यवतमाळ इथली बातमी आहे. नागपूर ताज फर्निचर. आज बघूया. आज आपला अग्रलेख आज नसतो, रविवार असल्यामुळे आज अग्रलेख नसतो. त्याच्या ठिकाणी आज आम्ही विशेष म्हणजे वारकरी पंथावरती एक सुंदरसा लेख आज आमचे सुरेंद्र बुराडे यांचा आहे. बुराडे हे अत्यंत आमचे डायरेक्टर आहेत आणि सातत्यानं लिहित असतात. वारकरी संतांचे वाळवंटी बंड
आणि ही बुद्धकालीन एक मोठी संस्कृती आजही सुरू आहे. त्याच्याच खालचा एक इतिहास तज्ज्ञ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, एक अभ्यासपूर्ण ग्रंथ, एक धनराज डहाट यांचा हा त्याची समीक्षा लिहिणारी डॉक्टर प्राध्यापक सुनंदा जुलमे हिचा हा अत्यंत त्याच्यावरती समीक्षा लेख आहे. पहाडी आवाजाचा स्वरसाथी गायक कमलेश येजुळे, राष्ट्रपाल सावंत यांचा एक त्यांच्यावरती असणारा एक खुलासा, एक त्यांचा आवाजावरती आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी कामं केलेले त्याच्यावरती एक चांगलासा लेख. भारतीय क्रांतिकारी महानायिका उत्कृष्ट संपादन असलेला संदर्भ ग्रंथ, एक चांगला एक संदर्भ ग्रंथ तुम्हा सर्व लोकांसाठी उपलब्ध राहील. दिनेश कोटांगळे हे लिहित आहे, त्याची समीक्षा आहे. त्याच्यानंतर आज 5-4वरती बघूया, 3वरती बघूया. आजचा 3वरती सत्याचे प्रयोग, आज आमचे मित्र डायरेक्टर विलास गजबिये यांचा हा लेख. केरळमधील नाडर धर्मांतराची कथा, अनेक ठिकाणी धर्मांतराचा प्रश्न होत आहे आणि नाडर ही समाज आमच्याकडे जसे फासेपारधी लोक असतात किंवा कोकणामध्ये मडारी लोक असतात, याच्यावरती आधारित तिथे केरळमध्ये जी समाज होती त्याच्यावर आधारित हा लेख. माझे बाबूजी अष्टपैलू हरहुन्नतजी व्यक्तिमत्वाचे धनी ॲडव्होकेट सखारामजी मेश्राम यांच्यावरती आधारित त्यांच्या मुलांनी लिहिलेला हा सुधीर मेश्रामचा हा लेख अत्यंत वाचनीय आहे. तृतीय रत्न नाटकातून शिक्षकाचा व स्त्री पुरुष समतेचा संदेश अनुज झलके यांचा हा लेख. हा ॲक्च्युली लेख होता प्राध्यापक हरिंदरके आणि त्याच्यात तोच लेख त्यांनी उचलला. आजच्या तुम्हा सर्व लोकांना महात्मा ज्योतिबा फुलेच्यावरती ते आधारित असणारा हा लेख. काव्य फुले म्हणून आज आमचे आज आमचा कविता संग्रह आहे. प्राध्यापक भीमराव गायकवाड यांच्या सदराखाली लिहिणारे लोक विनोद उल्ली पवार, पहिला पाऊस चित्तरंजन चौरे, नंतर संगीता राजेश नागदिवे, माझी आई याच्यावरती अशा रीतीनं आम्ही बहुजन सौरभच्या 4 पानाचा आढावा घेतलेला आहे. पावसाचा आस्वाद सर्वीकडे आम्ही नागपूर विदर्भाचे लोक घेत आहोत. सकाळपासनं काल 2-4 दिवसातनं मुसळधार पाऊस आहे, त्याच्यामुळे शेतकरी निश्चितच फुलावलेले आहेत. त्यांना एक चांगली संधी आहे पेरण्याची आणि बाकी ठिकाणची. आज अशा रीतीने आज आम्ही संपवलेलं आहे. तुम्हा सर्व लोकांना पुन्हा विनंती करेल की बहुजन सौरभला जास्तीत जास्त लोकांना फॉरवर्ड करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. एवढं बोलतो आणि थांबतो. भेटूया आपण उद्या. जय भीम.